Assalamu alaikum students. Welcome to our second lecture. We were studying parts of speech and in the last lecture we covered pronouns. But I think we need to take a little break from it, so let's learn something else today. You will learn about articles today, and reading your introductions, I did realize that a lot of you had a problem with articles. You don't know when to use the, and n. So I think this lecture would be very helpful for you guys. Now let's start our lecture without any further delay. So, what are articles? Articles are words that define a noun as specific or unspecific. It means that they tell us that the thing that is being talked about is something particular or just general. It indicates or tells us whether the identity of the noun is known or unknown. Now, I'll translate everything back in Urdu for your benefit. बेसिकली आर्टिकल्स वो लफ्ज़ होते हैं जो कि बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, यानी पर्टिकुलर है या बस किसी जनरल चीज़ की बात हो रही है। यानी कि जिस चीज़ की बात हो रही है उसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि नहीं पता, ये भी बताता है। There are only three articles in English: a, and the. I think most of you knew that already, didn't you? There are two types of articles: definite article and indefinite article. The is definite article and a and n are indefinite articles. Let's take a look at them side by side so you're able to know the difference between them better. Let's talk about definite article. The is definite article. It is used for specific nouns. It means when the noun's identity is known. For example, give me the ball. Here, we use the because the ball's identity is known. I'm asking for a particular ball, not just any ball. That is why I use the word the. Let's paint a scenario so that you're able to understand it better. Just imagine that you're holding a ball and I ask you to give me the ball. You know which ball I'm talking about. I'm talking about the particular ball that you are holding. So I'll use the word the. So the ball's identity is known to me as a speaker and you as a listener. On the other hand, indefinite articles are a and an. They are used for non-specific nouns when we're talking about something in general, like it's not specific. For example, give me a ball. Here we are using the article a because we are not talking about something particular. We're just generally asking for a ball. Let's paint a second scenario, shall we? For example, I go to a shop and I ask them to give me a ball. It means I'm just asking them to give me any ball. There is nothing particular that I'm looking for. Now I'll translate everything in Urdu but very briefly. इंग्लिश में सिर्फ दो आर्टिकल्स की टाइप्स हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। द डेफिनेट आर्टिकल है और ये स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज़ होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो या उस चीज़ की आइडेंटिटी हमें पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी द बॉल। द आर्टिकल हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर बॉल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक बॉल पकड़ी हुई है और मैं आपसे वो बॉल मांग रही हूँ तो मैं द का आर्टिकल यूज़ करूँगी क्योंकि आपको और मुझे दोनों को बॉल की आइडेंटिटी पता है और मैं पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक बॉल की बात कर रही हूँ। आ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और ये तब यूज़ होते हैं जब हमें नाउन कि या तो आइडेंटिटी मालूम ना हो या फिर हम किसी जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात ना कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी अ बॉल।
यहाँ आ का आर्टिकल इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक बॉल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जनरली बॉल की बात कर रहे हैं. गिव मी एनी बॉल, कोई भी बॉल. दैट्स वाई आ का वर्ड यूज़ हुआ है. I am assuming that so far you're all able to understand it and it does seem easier, but unfortunately it is gonna get complicated. Now we will dive into them in detail. Let's talk about indefinite article first. A and an are indefinite articles. They are used for non-specific or general nouns. It means that we use them when we're not talking about anything in particular. They are used before a noun to indicate that the noun is non-particular or its identity is unknown. This is something I've already discussed with you guys. I'm just repeating the same thing. But now comes a different information, new information. They are used with singular countable nouns. That is something that you have to remember. It's very important. Let's take a look at a few examples now. First, we have give me an egg. Egg is the noun in this sentence, and we used an because first, egg is singular, it is countable. And we are not talking about any particular specific egg, we just want any egg, so we are using the article an. Next example is I have a book. Here we used a because first of all, we are not talking about any particular book. Second is that the word book is a singular countable noun. Next is I need an umbrella. Now, here I'm asking for just any umbrella. I'm not talking about any particular umbrella. And umbrella, this noun, is a singular countable noun. So, we're using the article an. The last example that we have is he was hit by a car. We are using the article a because we don't know the identity of that car. It could be any car. We don't know which car he was hit by. So we are using the article a. अब मैं हर चीज़ एक मर्तबा उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ. इंडेफिनेट नाउन तब यूज़ करते हैं जब नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो और उसकी आइडेंटिटी हमें पता ना हो, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात ना कर रहे हों. लास्ट एग्जांपल देखते हैं. ही वाज हिट बाय अ कार. तो यहाँ पे जिस कार ने उसे हिट किया उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता, इसलिए हम कह रहे हैं आ कार. हमने आ का आर्टिकल यूज़ किया है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार के बारे में बात नहीं कर रहे. कोई भी कार हो सकती थी जिसने उसे हिट किया, राइट. आपको उस कार की आइडेंटिटी नहीं पता. Now let's see this example. I need a bottle of water, and I included this example because I want to, of course, elaborate on a point that we have already established before, that indefinite article is only used with singular countable noun. It cannot be used with uncountable noun. If you guys remember our lecture on nouns, we discussed uncountable nouns, and in that we had talked about water as its example. Water is uncountable noun, but when you put water in a bottle, it can be counted, right? We can count the bottle. Let's think of another example. Remember, we had also talked about rice as its example, and rice, of course, is uncountable noun. But if I say that there's a grain of rice on the table, I'm talking about one grain of rice, and that one grain of rice is countable, right? So, in these cases where you have one bottle of water or one grain of rice, you can use indefinite article, but otherwise, you cannot use indefinite articles with uncountable nouns. Now, you must be wondering that there are two indefinite articles, a and an.
Which one you should use when? Well, I'll answer it right now, and things will get a bit complicated, so bear with me. The article an is used before a singular noun beginning with a vowel sound, and the article a is used before a singular noun beginning with a consonant sound. I'm assuming that most of you know what vowels and consonants are, but for those of you who don't know, I think I should explain them a little bit. So basically, all the letters represent certain speech sounds, and they are divided into two categories, vowel sounds and consonant sounds. These following letters A, E, I, O, U represent vowel sounds, and the vowel sounds are quite different from how we would pronounce an individual letter, but we're not going to get into that. That is a whole different thing. Except these five letters that represent vowel sounds, the rest of the letters, such as P, B, T, M, etc., they all represent consonant sounds. Just remember that N is used with vowel sounds, and A is used with consonant sounds. Let me explain it in Urdu for more clarity. जो लेटर्स हैं हर लेटर एक डिफरेंट साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है। 5 लेटर्स हैं A, E, I, O, U जो कि वॉवल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जितने भी लेटर्स हैं जैसे कि P, B, T, M, N, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन हम वॉवल साउंड्स के लिए यूज़ करते हैं और ए हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। Let's take a look at examples now. An egg. The word egg starts with the letter E, and the letter E represents a vowel sound. So we're using the article an with it. An egg. An apple. A again. This letter represents vowel sound. An elephant. An accident. An engineer. An instrument. Now let's take a look at when to use a. A book. B represents consonant sound. A teacher. A student. A cup. A car. A pen. All these letters B, T, S, C, P, they all represent consonant sounds. That's why we are using the article a with it. Now, things are about to get more complicated, if they weren't already. Now, we have an example here, an R. Now, you must be wondering why we use the article an with it when I just said that the letter H represents consonant sound, and we always use the article a with consonant sounds. Well, the reason for that is that the H in R is silent. So we basically read it as R, O sound. And what did we discuss before? The O sound is a vowel sound. So we use N instead of O. I know it seems a bit difficult, but you'll get a hang of it. Now let's compare a word that starts with silent H with words where we do pronounce H. We've already discussed this first example, an R, before. H is silent and we pronounce it as R, so the first sound is a vowel sound O. On the other hand, we have two other examples where the H is not silent, it is pronounced. A house, house. A horse,
In both of these examples, the H is clearly pronounced. So here we are using the article a. That is because now we have the consonant sound. अब एक मरतबा सब उर्दू में भी रिपीट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का बताया। वॉवल्स इंग्लिश में सिर्फ 5 होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और उन 5 वॉवल्स के साथ आप एन लगाते हैं और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ आप आ लगाते हैं। बट कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है, तो फिर जो नेक्स्ट उसके बाद वर्ड होता है अगर वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करे तो फिर उसके हिसाब से हमें आर्टिकल चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि पहली एग्जांपल है एन आर। अब एच कॉन्सोनेंट है, ये लेटर कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे एच साइलेंट है तो हम इसे एज आर बोलते हैं। तो जो ओ है वो वॉवल साउंड है, इसलिए हमें इसके साथ एन लगाना पड़ा, राइट। बट अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे वर्ड्स जो एच से स्टार्ट होते हैं बट जहाँ पे एच साइलेंट नहीं होता, तो फिर वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो हम फिर आ ही लगाते हैं। आ हाउस। अब ये जो एच है ये साइलेंट नहीं है और ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हम आ लगा रहे हैं। आ हाउस, a horse. We just discussed that which indefinite article you have to use when the noun begins with the um, vowel sound instead of consonant sound. And now we are looking at the noun beginning with the consonant sound instead of vowel sound. We have an example here, a user. Now, this noun starts with the letter U that is supposed to represent a vowel sound. But here, when you speak user, you see that the sound Y is being produced. So, basing off of that, we will use the article a instead of an, because the letter U that was supposed to represent a vowel sound is actually sounding like a consonant sound in this word. So let's do a comparison so that you can understand this point better. Here we have 6 examples and we'll take a look at them now. An umbrella. Now here we use the article an because the U is producing a vowel sound. Umbrella, sound. Then in the next example, an uncle, we again use the article an because the U is producing a vowel sound. Uncle. Then lastly, we have an Uber. Now here the sound is O, oo sound. Here it's producing oo sound. Okay, again it is producing a vowel sound, so we are using the article an. But on the other hand, we look at some other words that again start with U, but they're producing very different sound. They are producing consonant sound instead of vowel sound. A user, a university, a uniform. Here you see the sound is being produced is consonant, not vowel. अभी मैं सब उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हम उन वर्ड्स को देख रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स यू लेटर से स्टार्ट होते हैं, जो कि एक वॉवल साउंड को रिप्रेजेंट करता है, बट कैसे उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स यूज़ होते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह की वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, वॉवल हो रही है या कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जो पहली 3 एग्जांपल्स हैं वहाँ पे हमने आर्टिकल एन यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे जो यू है वो वॉवल साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है। अम्ब्रेला, अंकल, ऊबर। बट अगली 3 एग्जांपल्स देखिए तो वहाँ पे भी जो वर्ड है उसका पहला लेटर यू ही है, बट वहाँ पे वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वॉवल नहीं। अ यूज़र, अ यूनिवर्सिटी, a uniform. Another thing that you have to keep in mind is that the choice between a and an depends on the initial sound of the adjective, and most of you guys know what adjective is, but I'll still tell you what it is.
on the off chance that you don't know. Anyways, adjective is basically the quality, it represents the quality of the noun. It modifies the noun, it describes the noun. So let's take a look at these examples. A broken egg. Here, the word broken is adjective and it describes the noun, that is egg. A broken egg. Now here we will choose between a and an depending on the initial sound of the adjective instead of the noun that we had been doing before. A broken egg. Now the B represents a consonant sound, so we use the article a. But if there weren't any adjective here, then it would have been an egg. Same thing with other examples. An unusual problem. Here, unusual is adjective, so we will choose between the both articles depending on its initial sound. Here, the U in unusual represents a vowel sound, so we are using the article an. An unusual problem, but if we remove that adjective and just consider the noun instead of the adjective, then we use the article a. A problem, because P represents a consonant sound. Now on to the last example, an honest man. Now the H in honest is again silent. We pronounce it as honest. It starts with the vowel sound instead of a consonant sound. So we are using the article an instead of a. An honest man, but if we remove that adjective, then it will become a man. अब जल्दी से सब उर्दू में रिपीट कर लेते हैं। जब आपने आ और एन में से चूज़ करना हो और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आप एडजेक्टिव की इनिशियल साउंड की बेसिस पे आर्टिकल चूज़ करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है अब? अच्छा, एडजेक्टिव बेसिकली नाउन की क्वालिटी या कंडीशन को बताता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप नाउन की बजाय एडजेक्टिव की जो इनिशियल साउंड होगी उसकी बेसिस पे आर्टिकल चूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अ ब्रोकन एग। अब इस एग्जाम्पल में ब्रोकन एडजेक्टिव है और ब्रोकन किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? बी से, और बी लेटर रिप्रेजेंट करता है कॉन्सोनेंट साउंड को, तो हम आ आर्टिकल लगाएंगे, अ ब्रोकन एग। बट अगर ये एडजेक्टिव ना होता तो फिर क्या होता? फिर हम नाउन की बेसिस पे आर्टिकल चूज़ करते, और क्योंकि एग जो है उसका पहला लेटर ई वॉवल साउंड रिप्रेजेंट करता है तो हमने आर्टिकल एन यूज़ किया। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ये एच लेटर से स्टार्ट होता है वर्ड, और ये एच लेटर कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंट करता है। बट अब मसला यहाँ क्या आ गया है? ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, हम बोलते हैं ऑनेस्ट, यानी ओ साउंड आ रही है जो कि वॉवल साउंड है, तो उसके साथ फिर हम एन का आर्टिकल लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन। अगर हम ये एडजेक्टिव हटा दें तब क्या आएगा? अ मैन। हम नाउन की बेसिस पे आर्टिकल चूज़ करेंगे और मैन में एम जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ जाएगा अ मैन। There are a lot more rules that you have to keep in mind, but I'm not going to talk about them right now because I don't want to confuse you guys even more than you might already be. Next up, we have definite article. The is definite article. It is used for specific or particular nouns. It is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known. It can be used with both singular and plural nouns and with both countable and uncountable nouns. This is the information that you have to keep in mind. It is used with specific nouns, and it is used with both singular and plural nouns and with both countable and uncountable nouns. Let's take a look at some examples. The chair broke. Now, this
Noun chair is singular and it is countable. The chair broke. We are using the article the because we're talking about a specific chair that broke, right? We're talking about a particular thing. That's why we use the article the. In the next example, we have I have the books you need. Now, here, the noun books is plural. That tells you that the article the can be used with singular and plural both. And we use the article the because we are talking about particular books. I know which books you need, and you also know which books you need. So the identity of those books is known to the both of us. So we'll use the article the because we're talking about particular books. Next example is I watched the movie you recommended. I watched the movie. You and I both know which movie we are talking about. It is a specific movie. So again, we use the article the. Last is the stolen car has been found. Again, we are talking about a particular car that was stolen. So we use the article the. Now, we've covered some examples that show us that the article the is used with specific nouns, and those nouns can be singular or plural, it doesn't matter. Now, let's talk about the other thing. The article the can be used with countable and uncountable nouns both. We've already discussed countable nouns before. Now, let's talk about uncountable nouns. Let's take a look at its example. He spilled the water on himself. In this sentence, water is uncountable noun. We can use the article the with uncountable noun. Remember, we cannot use indefinite articles with uncountable nouns, but we can use definite articles with uncountable nouns. But then we have another choice too. If we want to skip it altogether, we can. He spilled water on himself. We can even do without the article the. हमने इस बारे में बात की है कि डेफिनेट आर्टिकल द सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है. तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल है, ही स्पिल्ड द वाटर ऑन हिमसेल्फ. तो यहाँ पे हम द यूज़ कर रहे हैं. बट एक अच्छी बात यह है कि जब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो उनके साथ अगर आप आर्टिकल स्किप भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही स्पिल्ड वाटर ऑन हिमसेल्फ. ठीक है, यहाँ पे हमने द आर्टिकल रिमूव कर दिया एंड इट्स फाइन इसके बगैर भी. There are a lot of rules when it comes to the article the, but we're not going to talk about them because that would be like too much for you guys. For example, you cannot use the article the with the names of countries, but then there are some countries that you have to use it with, like the United States. So it can be confusing. There are rules, then there are exceptions where those rules don't apply. It can be too much. So we will skip it altogether. Just keep in mind the things that we have discussed. Now, there are times when a or an can be used when the noun is mentioned for the first time, and then the article the is used in the subsequent sentences. इसका मतलब ये है कि sometimes हम indefinite articles पहले यूज़ कर लेते हैं एक सेंटेंस में और उसके बाद हम definite article यूज़ कर लेते हैं जो उसके बाद sentences आते हैं. For example, I bought a house. The house is large enough for my family. Now, in the first sentence, we use the article a, that is indefinite article. Why? Because I'm just making a general statement. The identity of the house is not known to you. So I'm using the article a. But in the next sentence, I'm using the because now you know which house I'm talking about. I'm talking about the house that I bought. So here I am using definite article the. The house is large enough for my family.
You know which house I'm talking about. I'm talking about the house that I bought. इस एग्जाम्पल में देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया बिकॉज आपको हाउस की आइडेंटिटी का नहीं पता, मैंने एक घर ख़रीदा, ठीक है। फिर अगले सेंटेंस में मैंने द आर्टिकल यूज़ किया, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया, क्योंकि अब आपको उस हाउस की आइडेंटिटी का पता चल गया, ठीक है। आपको पता है कि मैं अब उस घर की बात कर रही हूँ जो मैंने ख़रीदा था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में उसी हाउस की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे द आ गया और पहले आ गया, तो आप इस तरह भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। Now let's sum it all up. Let's look at them side by side so you know what's the difference between them and when to use which article. Definite article is the, and a and an are indefinite articles. Definite articles are used for specific nouns and indefinite articles are used for non-specific nouns. Definite articles are used with both singular and plural nouns, whereas indefinite article is only used with singular nouns. It cannot be used with plural nouns, okay? And definite noun can be used with both countable and uncountable nouns, but indefinite article can only be used with countable nouns. It cannot be used with uncountable nouns. आप इन्हें एक मरतबा साइड बाय साइड देख लें और ये चीज़ें लाजमी याद रखें, ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। द डेफिनेट आर्टिकल है और आ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स दोनों सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, ये प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं होता। फिर ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है डेफिनेट आर्टिकल, बट इनडेफिनेट आर्टिकल सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कभी भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है। With this, our lecture has come to an end. I know that it was quite difficult, but watch this video a couple of times and I know you'll be able to get it. And if you still have any questions, of course, we will talk about them in our class. Anyways, good luck and bye.